Hello everyone. So today we are going to learn about a very interesting question related to rotation. That how can angular velocity be a vector? In other words, why does angular velocity need to be a vector? Right? What is the great use of it being a vector? So suppose we have a point P which is moving in a circular path around a fixed point O, right? And at a particular instant, let me call the position vector of P relative to O, which is the vector OP. Let me call that position vector as R. तो position vector को मैं R बुला रहा हूँ. Now, what I want to do is कि as P moves by a very small distance during a very small time interval, as P moves along the circle, how can I get the position vector of P at that later instant? कि अभी मेरे को पता है कि पोजीशन वेक्टर R है, तो एक छोटे से टाइम इंटरवल बाद पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? दैट इज़ माय क्वेश्चन. सो लेट मी बिगिन बाय doing something else. Let me begin by adding a very small vector to R which is in a direction perpendicular to R. तो ये मेरा ओरिजिनल वेक्टर है R. So this is my this vector is my original vector, right? And I'm adding a very small vector dr to it, and the direction of dr is perpendicular to R, right? तो सबसे पहले तो let me check कि अगर इन दोनों को ऐड करूँगा तो जो फाइनली वेक्टर आएगा which I am calling R prime is the sum of these two. तो R prime का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो R prime का मैग्नीट्यूड will be the magnitude of R plus dr, right? And by Pythagoras theorem we can say that the value of the magnitude of R plus dr should be just under root R square plus dr square. कि मतलब ये वेक्टर है, R वेक्टर है और ये dr वेक्टर है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं. जब मैं इनको ऐड करता हूँ तो जो वेक्टर मेरे को मिलता है, जो रिजल्टेंट मेरे को मिलता है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा? इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स को स्क्वायर कर दिया और ऐड करके अंडर रूट ले लिया. दैट इज़ वेरी बेसिक रिजल्ट, राइट? तो यहाँ पे I can neglect this dr square term, right? I can neglect this dr square term inside the under root, and therefore I'll get that the magnitude of R prime is this same as the original vector R. So this is very interesting कि मैंने एक वेक्टर लिया R, उसमें कोई भी छोटा सा वेक्टर मैं अगर उसके परपेंडिकुलर ऐड कर देता हूँ तो जो रिजल्टेंट मिलता है मेरे को उसका मैग्नीट्यूड भी ओरिजिनल वेक्टर के बराबर ही होता है. सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट. इस पर थोड़ा सा ध्यान से सोचेंगे कि अगर मैं डी आर वेक्टर को आर के ही डायरेक्शन में ऐड किया होता, अगर इस डायरेक्शन में ऐड किया होता या इसके ऑपोजिट ऐड किया होता, देन आई वुड हैव गॉटन. सो लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर कि अगर ये मेरा आर है और मैंने डी आर वेक्टर को इसी डायरेक्शन में ऐड किया होता तो आई वुड हैव गॉटन द मैग्नीट्यूड आर प्लस डी आर. एंड इन दैट केस आई वुड नॉट हैव नेग्लेक्टेड दिस डी आर बिकॉज वी यूजुअली कीप द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन टर्म्स, right? And we neglect the second approximation term. So in the first approximation, I can say that if I add a very small vector to R and that very small vector is in the same direction as R, तो R का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा. R का मैग्नीट्यूड फाइनली इतना हो जाएगा, R प्लस डी आर हो जाएगा या R माइनस डी आर हो जाएगा, व्हाटएवर. बट अगर मैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐड करता हूँ then I get a vector whose magnitude remains the same. So this point is the central point related to this concept of the angular velocity vector. तो मैंने एक dr vector ऐड किया perpendicular to R, उससे मेरे को R prime मिल गया, right? So what this means is we can get the position vector of P a very short interval later by adding a very small vector डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द ओरिजिनल पोजिशन वेक्टर. तो ओरिजिनल पोजिशन वेक्टर कुछ आर है किसी इंस्टेंट पे पॉइंट पी का, अगर मैं उसमें एक छोटा सा वेक्टर ऐड कर देता हूँ परपेंडिकुलर टू दिस आर वेक्टर, तो मेरे को
p का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा थोड़े छोटे से टाइम इंटरवल बाद। वाई कैन आई से दिस? बिकॉज ये जो वेक्टर है r और ये जो वेक्टर है r प्राइम, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और मेरे को पता है कि बिकॉज p इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, बिकॉज p इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, its distance from O remains constant and therefore पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, p के पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, that remains constant, that has to remain equal to r। ये वाला जो r है मेरा, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, राइट? तो मेरे को एक वेक्टर r था मेरे पास, और मेरे को एक और वेक्टर ऐसा चाहिए था which is just rotated by a very small amount but its magnitude is the same as the magnitude of r, and this I can achieve by adding a very small vector to the original vector r. So this is the interesting point over here. And what should be the magnitude? The second question is what should be the magnitude of dr, right? तो suppose जो छोटा सा टाइम इंटरवल है उसमें मैंने एंगल डी थीटा रोटेट किया है आर को, द पॉइंट पी इज हैज मूव्ड सच दैट द एंगल इट हैज सबटेंडेड एट द सेंटर ओ इज डी थीटा, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर दैट यू मस्ट ऐड टू आर, द मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर शुड बी आर डी थीटा। कि अगर तो एसेंशली क्या कंक्लूजन हो गया कि कोई वेक्टर है r, उसको डी थीटा एंगल से अगर रोटेट करना चाहता हूं मैं, तो आई कैन ऐड अ स्मॉल वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड r d theta which is perpendicular to it, and I will get another vector whose magnitude remains the same, whose magnitude is the same as r, but it is rotated by a small angle d theta. So this is very interesting. तो अगर मैं dt से डिवाइड कर देता हूं, राइट? So if I write dr by dt, तो बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि I want to write the velocity of p, I want to write the instantaneous velocity of p, and dr is the displacement of p, right? कि अब मैं अगर dr क्या था, what is dr, what is the meaning of dr? The meaning of dr is the displacement of the point p during this time interval. कि original position vector r था, final position vector r prime था, so that is the displacement, that is the meaning of displacement, final position minus initial position. So my dr by dt must be the instantaneous velocity, right? So the instantaneous velocity can be achieved, can be written as the cross product of a vector which is perpendicular to the plane of rotation of r. तो ये जो जिस प्लेन में हमने फिगर बनाई है, जो प्लेन आपको दिख रहा है, जो पेपर का प्लेन है या स्क्रीन का प्लेन है, दैट प्लेन इज द प्लेन ऑफ रोटेशन ऑफ आर। इसी प्लेन में ये वेक्टर रोटेट कर रहा है या पी पॉइंट रोटेट कर रहा है। तो इसके परपेंडिकुलर अगर मैं एक वेक्टर लेता हूँ n, सो यू शुड जस्ट हियर मी आउट, दिस विल ऑल बिकम क्लियर इन एन इंस्टेंट। तो अगर मैं इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर लेता हूं n, and I take the cross product of that vector with my original vector r, then what will I get? तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं जब भी, तो हमें एक वेक्टर मिलता है जो दोनों गिवन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है, राइट? तो अगर मेरा ये r वेक्टर है और n वेक्टर सपोज इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, जस्ट फॉर एन इंस्टेंट अगर सोचो कि n इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, then you all know how to take the cross product. तो n क्रॉस r से ये dr वेक्टर वाली डायरेक्शन आएगी, राइट? dr वेक्टर वाली डायरेक्शन आएगी, राइट? तो ये तो समझ में आ रहा है कि अगर n is pointing out of the plane and r is pointing in this direction, then n cross r will point in this direction. But what about the magnitude? तो मैग्नीट्यूड भी दोनों साइड का बराबर होना चाहिए। तो उससे हम लिख सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ n शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ dr by dt। तो ये यहाँ पे dr by dt होना चाहिए था, सो लेट मी जस्ट करेक्ट इट। तो बेसिकली दोनों साइड पे मैग्नीट्यूड्स बराबर होने चाहिए इन दिस इक्वेशन।
एंड n क्रॉस r में जब हम मैग्नीट्यूड्स लेंगे तो वी विल गेट n इंटू आर इंटू साइन थीटा, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन n and r which is 90 degrees. So that sign will be 1 because n is pointing perpendicular to the plane. तो n और r के बीच का एंगल 90 degrees है. So if we compare the magnitudes on both sides, we get that the magnitude of n should be d theta by dt. कि dr का मैग्नीट्यूड हमें पता है r d theta होना चाहिए था, हमने पहले कंक्लूड किया था. Again, this will become very clear in an instant. I'm still explaining. So the magnitude of this vector perpendicular to the plane of rotation should be d theta by dt. तो हमने पूरे सिचुएशन में क्या किया कि we wanted to write the velocity vector of the point P. We wanted to write the velocity vector of point P. In other words, we wanted to write कि अगर एक छोटा सा टाइम इंटरवल dt होता है, गुजरता है, जिसमें the vector r, the position vector r of the point P rotates by a small angle d theta. तो P पॉइंट रोटेट करता है बाय d theta या पोजिशन वेक्टर रोटेट करता है बाय d theta आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स. तो इन अ शॉर्ट टाइम इंटरवल जिसमें पोजिशन वेक्टर रोटेट्स बाय अ स्मॉल एंगल d theta, उसमें व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P dr, ये हम लिखना चाहते थे. तो हमें उसका मैग्नीट्यूड तो पता है, उसका मैग्नीट्यूड तो r d theta है. So that is something that we already know. But what about the direction of dr? तो डायरेक्शन dr का क्या होना चाहिए था, वो हमने ऐसे कंक्लूड किया कि अगर मैं dr को r के परपेंडिकुलर करके ऐड कर दूं r में तो काम बन जाता है. That is what I showed in the initial part of the video over here. So in essence, if you add a small vector dr to the original vector r, and the magnitude of that dr vector is r d theta, the original vector rotates by an angle theta, rotates by an angle d theta, and if this happens in time interval dt, then the velocity, which is dr by dt, is just this small vector divided by dt, and this small vector divided by dt, dr by dt, can be achieved by a cross product. तो क्रॉस प्रोडक्ट क्यों लिया, क्योंकि हमें डायरेक्शन परपेंडिकुलर चाहिए थी, राइट. तो बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट इज जस्ट अ वे ऑफ गेटिंग अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू आर, कि जो ओरिजिनल वेक्टर आर है उसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर अगर चाहिए तो क्रॉस प्रोडक्ट लेके आ सकता है वो, और हमेशा आ जाएगा. अगर हम उस वेक्टर n को परपेंडिकुलर टू द प्लेन ले लेंगे तो किसी भी इंस्टेंट पे जो n वेक्टर है वो हमारे पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा. और जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, किसी भी इंस्टेंट पे क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो वी विल ऑलवेज गेट अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर. और n का हम मैग्नीट्यूड अगर d थीटा बाई dt के बराबर कर दें तो मैग्नीट्यूड भी सही आ जाएगा dt का, विच इज r d थीटा. और इसमें एक और फाइनल पॉइंट है दैट देयर आर टू पॉसिबल डायरेक्शंस ऑफ n which is determined by what is the direction of rotation. तो अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, जो कि हमने यहाँ पे लिया है, then n must point out of the plane. So let me write it down over here. So anti-clockwise rotation is n is n is out of the plane, and clockwise rotation is n is into the plane. So this is how the angular velocity vector works. So n is nothing but the angular velocity vector itself. जो ये n वेक्टर हम बात कर रहे थे कि n एक वेक्टर चाहिए हमें जिससे हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो वो n वेक्टर इज नथिंग बट द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर ओमेगा. ओमेगा का मैग्नीट्यूड इज d थीटा बाई dt and its direction should be perpendicular to the plane of rotation. Its
direction should be out of the plane if the rotation is anti-clockwise, and its direction should be into the plane if the direction of rotation is clockwise. So यही facts हैं ओमेगा के बारे में. Again, its magnitude should be d theta by dt, the rate at which the angle subtended at the center grows, the rate at which the position vector is rotating, d theta by dt, the rate of rotation. That is what angular velocity is, the rate of rotation. But why does it need to be a vector? It's because, as I described, because we can take the cross product of that omega vector with our position vector to get the instantaneous velocity. So this is what I've written at the end. So in general, if a point P moves in a circular path around a fixed point O, its instantaneous velocity vector can be written as a cross product of its angular velocity vector and its instantaneous position vector. तो instantaneous position vector का मतलब है वो चेंज होता रहेगा, किसी भी इंस्टेंट पे पोजीशन वेक्टर कुछ हो सकता है, बट ये पक्का है कि उस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी वेक्टर है वो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा. वो तो हमें पता ही है कि अगर ये सेंटर ऑफ रोटेशन है, तो लेट मी ड्रॉ अ फिगर हियर कि ये सेंटर ऑफ रोटेशन है एंड दिस इज द पॉइंट P. So this is the position vector at this instant, and the velocity vector is always perpendicular to the position vector. This is in the case of an anti-clockwise rotation, or omega is coming out of the plane. So omega is coming out of the plane. This is the vector r, OP, और omega और r का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो we'll get a position vector, we'll get the velocity vector v. So this vector equation ensures both things. It ensures that v is equal to r omega, which you all know, that velocity must be equal to r times the angular velocity, radius times the angular velocity, v equal to r omega, the most common, the first relation you learn in circular motion. And it also, the vector equation simultaneously also tells us the direction of the velocity, कि जो instantaneous position vector है उसके परपेंडिकुलर, मतलब रेडियस के परपेंडिकुलर, मतलब tangential direction. So in other words, the instantaneous rate of change of a rotating vector A of a constant magnitude can also be written like this. So if we have a rotating vector A whose magnitude remains constant, so it's nothing but the exact same thing put into another language, that if I'm not talking about the point P over here, I'm talking just about the vector R, कि कोई point नहीं move कर रहा है circular path में, I'm just talking about a vector which is rotating. So if there is a rotating vector but its magnitude is constant, then its rate of change at an instant, which is dA by dt, can be written as the cross product of its angular velocity, or angular velocity का again direction will be determined by the direction of rotation, कि अगर A is rotating anti-clockwise, तो अगर कोई vector है A and it is rotating anti-clockwise like this at a rate omega given by d theta by dt. So d theta by dt is nothing but the rate of rotation, कि कितने टाइम में कितना एंगल टर्न कर गया. So if it is rotating at this rate and it is rotating anti-clockwise, then our angular velocity vector will be perpendicular to the plane, coming out of the plane. And at any instant, the rate of change of A can be written as that angular velocity vector cross with the instantaneous vector A. अगर इस इंस्टेंट पे वेक्टर ऐसा है, ये वाला है, this one, then take the cross product of this, of omega with this vector, omega cross A है. A cross omega से उल्टा हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, because cross product में
If you exchange the terms, then you get the wrong answer, you get a negative answer. So omega cross A लेने से we get a vector in this direction, which is the instantaneous rate of change of A. So you can apply this concept of the rate of change of a rotating vector to finding the acceleration of the rotating point. कि जो P point अगर rotate कर रहा है तो उसकी velocity vector तो हमने निकाल लिया. So how will you find the acceleration vector? So you can comment below the video. And I hope you enjoyed this concept. This is a very interesting concept, and I certainly enjoyed explaining it. So thanks for watching.